Okay, so before starting the propagation, let I just give you the basic idea about the differentiation. So how differentiation works, otherwise what is the concept of the differentiation? So guys, अगर मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है that is nothing but an x square और मुझे इसका differentiation मतलब with respect to x मुझे इसको differentiate करना होता है, what is the answer? अगर मुझे किसी ने बोला oh sir like dx square x square is your function and differentiate it with respect to x, then the answer is 2x. Then answer is 2x. Okay, अगर मानिए मेरा function, this is my function, मेरा function एक single variable का है, so मैं directly fully differentiate करूँगा. But अगर मान के चलिए मेरा function, like my function is f of xy, is a combination of two variables. It's actually a combination of two variables. Let I say it's a combination of two variables, and the function is actually 2x square y. The function is actually 2x square y. And someone says, sir, x and y both are the variables. Now differentiate f. Okay, just differentiate f. तो मैं directly नहीं लिख सकता df by dx. I cannot write down df by dx. क्यों? Because f अभी दो variable का combination. F depends on two variables, so we cannot directly find out df by dx, or we cannot directly find out df by dy. Okay, हम df by dx भी नहीं निकाल सकते, and हम लोग df by dy भी directly find out नहीं कर सकते. That is not possible. That is not possible. Why? Because my function depends on two variables. So what we can do? Up partially. अब ऐसा कोई बोले कि okay sir, now there is a change in x. What is the change in y? Sorry, there is a change in x. What is the change in f? So in short, what is differentiation? Differentiation in the sense what? अगर कोई एक quantity में changes आया, then what's the change in final final output? Let I give you the example. Like मैं ऐसा simple बोलूँ कि okay, now मैं actually 30 किलोमीटर per speed से actually drive कर रहा हूँ, 30 किलोमीटर per hour, 30 किलोमीटर per hour की speed से अगर मैं drive कर रहा हूँ, and I want to just cut actually 20 kilometers. So what's my speed? That is actually v. V is actually velocity that you can just it's my speed, or that is actually ds by dt. Okay, ds in the sense change in distance with respect to change in time. So अगर मैं 1 hour में कितना पहले पोजीशन क्या थी, मान लो मैं फर्स्ट एक्चुअली 0th पोजीशन पे था, एंड आफ्टर 1 hour मैं 30 किलोमीटर कट कर चुका. So that is my second stage, that is S2. So S2 minus S1. S2 minus S1 with respect to time. Time में कितना changes आया? So that is actually T2 minus T1. Okay, that is actually T2 minus T1. So that is my velocity. Generally हम लोग इसको like this is the actually basic formula of V. But obvious वहाँ पे limit वगैरह सब कुछ लगता है कि हो सकता है उतना इसको minimize करना है. So we have to just say that oh limit T2 minus T1 tends to 0. But just ignore that. मैं पूरा का पूरा डिटेल में नहीं आपको differentiation नहीं समझाने वाला. But right now the thing is generally generally differentiation का मतलब क्या होता है? Change in one quantity with respect to change in another quantity. Okay, so now here मुझे ये पूरे function, what is my function? In this case my function is actually x square. Here my function is actually x square. So मुझे ये f में changes चाहिए, मुझे f में changes चाहिए with respect to change in this x. Okay, तो x में कितना changes आएगा? So dx in the sense new value of x with respect to it all, sorry, new value of x minus old value. So in short, x2 minus x1. x2 minus x1. So what is the change in actually f? So f2 minus f1. So guys, finally, अगर इसको हम लोग इसके differentiation के basic rules apply करें, then the final answer is actually 2x. That is the thing. But यहाँ पे इस case के अंदर मेरा जो function है f है, वो एक ही variable के ऊपर dependent है. That is actually x. But now, if your function depends on two variables, x and y, okay, now there is only a change in a single variable. एक ही variable में changes आया, then what is the change in f? मान लो y में changes आया, then what is the change in f? So that we cannot directly write down df by dx or df by dy because ये fully differentiation नहीं है, partially dependent है. So that is known as del f by del x. That is actually known as del f by del x. Otherwise, you can say that is actually known as del f by del y. So change in f with respect to x, change in f with respect to y. तो जब आप del f by del x find out करें, जब आप del f by del x find out करें, at that time you have to consider y is constant. जब हम लोग ऐसा करें कि okay, difference in f with respect to difference in x, consider मैं दो quantity पे काम कर रहा हूँ. हो सकता है कि like मैंने कोई एक चीज लेके मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कोई एक चीज मतलब कोई एक weighted चीज लेके मैं ड्राइव कर रहा हूँ, so my speed
my speed actually measured by the weight of that particular item, weight of by that particular like container which I have. And second thing actually displacement, मतलब like मैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे कैसे, ओके सो हो सकता है कि वेट बढ़ने पे भी मेरा स्पीड डाउन हो सकता है, वेट डिक्रीज होने पे मेरा स्पीड इंक्रीज हो सकता है, ओके सो लाइक दैट, मतलब एक क्वांटिटी के ऊपर वो डिपेंड करता है, कोई एक क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इन अ सिमिलर वे हम लोग जब ड्राइव कर रहे हैं तब हमारे पास किसी और क्वांटिटी भी है, आई हैव वन मोर क्वांटिटी, मेरे पास एक और क्वांटिटी है, लेट अस से कंटेनर 2, कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2। सो अगर मेरा कंटेनर 1 का वेट इंक्रीज हुआ माय स्पीड विल बी डाउन, कंटेनर 2 का वेट इंक्रीज हुआ माय स्पीड विल बी डाउन, तो दोनों के साथ में पैरेलली वर्क नहीं कर सकता। ओके सो दैट्स दैट। सो नाउ जब मैं कोई एक चीज को कंसीडर करूं, जैसे मैंने यहाँ x को कंसीडर किया तो y को कांस्टेंट मानना, सो y विल रिमेन सेम, y को चेक करना ही नहीं है, y इज लाइक 2, ओके y को मान लीजिए कांस्टेंट है, सो 2y विल रिमेन सेम, आपको सिर्फ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लाना है। सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 2x, द आउटपुट ऑफ दिस वन इज एक्चुअली 4xy। व्हाट अबाउट दिस वन, df by dy, सो इसको y को आपको एक्चुअली डिफरेंशिएट करना है, x को कांस्टेंट मानना है, so 2x square remains same, y का differentiation होता है 1, okay, with respect to y का differentiation होता है 1, so the answer is 2x square actually, so that is something about the differentiation, okay, that is something about the differentiation, I hope that's clear guys। so हम लोग partial derivative पे work करने वाले, okay, so this will be our like this things we will use, okay, ये चीज हम use करेंगे। अगर partial derivative मतलब your function is a combination of more than one variable, your function contains more than one variable, but I want to just differentiate, I want to just find out the derivative of, I want to just find out the derivative of my function with respect to a particular variable. Then second variable, third variable, fourth variable you have to consider as a constant. That's it. Now the next thing is, consider I have an equation like this. ये थोड़ा याद रखिएगा, this is important one. तो मान लीजिए मुझे इस तरीके से दिया, my function is actually f of x, my function is actually f of x, and I want to differentiate like sorry, my function f of x is equals to actually 1 upon 1 plus e raised to minus x, 1 upon 1 plus e raised to minus x, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना। function f of x depends on a single variable only, that is x, and why I just use this, because it's a sigmoid function। अगर आपको पता हो that is a sigmoid, हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन के लिए sigmoid यूज करते थे, स्टेप फंक्शन, sigmoid function, ReLU function, so that's the sigmoid function, okay, that's the sigmoid function, that is the activation function actually। so मुझे इसका differentiation निकालना है, and before that let I just clear one more thing। तो मान लीजिए मुझे f of x 1 upon x दिया हुआ है, f of x is equals to 1 upon x, and someone say sir please find out the derivative of this one, so f dash x, otherwise df by dx is equals to minus 1 upon x square, that is the formula, minus 1 upon x square, that is the formula, okay, whatever it is, minus 1 upon x square, but in the place of x if you have a formula, in the place of x if you have a formula, in the sense अगर मुझे किसी ने बोला ओ सर मेरे पास x नहीं है, डिवाइड में मेरे पास x नहीं है, I have f of x is equals to I have 1 upon 1 plus x square, मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से, then I will apply the same formula। what is the formula, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूं तो क्या होगा, f dash x is equals to minus 1 upon डिनोमिनेटर में जो भी है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो भी है उसका स्क्वायर, सो 1 plus x square होल स्क्वायर। देखिए ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा था, ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा था, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या था, I have a x, तो मैंने x स्क्वायर लिखा, तो यहाँ पे मेरे पास 1 plus x स्क्वायर था, मैंने उसका स्क्वायर लिखा, बट अगर x के सिवा दूसरा कुछ भी आपके पास अवेलेबल है डिनोमिनेटर में, अगर x के सिवा दूसरा कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट गाइस जस्ट उसका आप स्क्वायर कर सकते हो, बट उसका आपको 1 सेकंड डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा। सो मल्टीप्लिकेशन में 1 plus x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन आएगा। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 plus x स्क्वायर, so what obvious one is constant, so that is 0, x square का आएगा 2x, the final answer is minus 2x divide by 1 plus x whole square, sorry 1 plus x square whole square। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, so now these are the basic things जो हम लोग को चाहिए होगा, okay, so now let I just draw a line over here, okay, so now let me just do one thing, मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालने की ट्राई करता हूँ। किसी ने मुझे बोला सर आई हैव अ सिग्मॉइड फंक्शन, प्लीज फाइंड आउट द f dash x, ओके, प्लीज फाइंड आउट द f dash x। मुझे अब मैं नहीं सोच रहा कि वो पार्शियल डेरिवेटिव है फुल डेरिवेटिव,
ओके मैं सिर्फ मान रहा हूँ f dash x, अदरवाइज यहाँ पे कुछ और भी कॉम्बिनेशन है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ और भी टर्म्स है, लेट आई कंसीडर मल्टीप्लिकेशन में y है, मल्टीप्लिकेशन में t है, मल्टीप्लिकेशन में w है, इट डजंट मैटर, मुझे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई? बिकॉज अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये टर्म का सोच रहा हूँ, बाकी जितने भी टर्म्स है उसको मुझे कांस्टेंट मानना है, बाकी जितने भी टर्म्स है मुझे उसको कांस्टेंट कंसीडर करना है। व्हाई? दैट्स अ रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। सो राइट नाउ वे सिर्फ 1 plus e raised to x का ही सोच रहा हूँ। व्हाट इज द डेरिवेटिव एज पर द रूल? सो एज पर द रूल द डिफरेंशिएशन और द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज 1 minus 1 upon 1 plus e raised to minus x whole square। बट रूल जस्ट सेज कि सर आपने अगर डिवाइड में x की जगह कुछ और टर्म है तो उसका भी आपको डिफरेंशिएशन लिखना है। सो 1 plus e raised to minus x का भी डिफरेंशिएशन मुझे करना है। Now that's that. Now what is the differentiation of 1 plus e raised to minus x? 1 is constant, constant का differentiation होता है 0, so that is 0. e raised to minus x का होता है minus e raised to minus x. e raised to minus x का होता है minus e raised to minus x. तो पहले तो ये minus की साइन जो minus 1 के साथ था, अब e raised to minus x का हुआ minus e raised to minus x. ओके डिवाइड में लिखेंगे 1 plus e raised to minus x whole square, minus x raised to whole square. Now finally that's that. Now अब मैं क्या लिखूंगा? minus minus plus, so here I have e raised to minus x in divide 1 plus e raised to minus x. That's actually that this function I will use. Okay, back propagation में ये चीज मैं use करने वाला हूँ. That's that. So like e raised to minus x 1 plus e raised to minus x square. Okay, let us save this. ये हम लोग को use आने वाला है. Now the next thing is, okay, now guys what I'm use like next में ये थोड़ा सा चीज यहाँ से use करने वाला हूँ. Okay, now consider this term, ये जो term मेरे पास available है, this term यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, that term is actually known as like let I say that is actually h of j or h of k. You can just write down anything. Okay, मैं इस टर्म का कुछ नाम रख रहा हूँ, मैंने इस टर्म का कुछ नाम रखा, that is h of j. Okay, that is h of j. Otherwise let I say that is actually like yeah that's it. हम लोग h of j रख देते, like right now कुछ भी उसका नाम कुछ भी रखते हैं. So इसको और simplify करना चाहता हूँ. This term I want to just simplify this term, like okay, and then I want to just simplify this. I want to rewrite this term in the form of hj. So now how to rewrite this one? So what's the term? It's actually e raised to minus x upon 1 plus e raised to minus x square. So when I just rewrite is like 1 plus e raised to minus x, sorry, 1 plus e raised to minus x minus 1. देखो मैंने क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर को एज इट इज रख देते हैं 1 plus e raised to minus x whole square. ओके मैं न्यूमरेटर में +1 ऐड किया, +1 ऐड किया और मैंने -1 लिखा, दैट्स इट. ओके मतलब +1 एंड -1 दैट विल बी कैंसल आउट. दैट मींस मैंने न्यूमरेटर में क्या रखा? e raised to minus x. So that I have in a previous step that was actually e raised to minus x. The same thing is here. Now we separate divide that. Okay, so what will happen? 1 plus e raised to minus x divide by whole denominator. 1 plus e raised to minus x whole square minus 1 upon 1 plus e raised to minus x whole square. Okay, now what is the next thing guys? यहाँ पे like न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई टर्म सेम है, then it will be cancel out. So यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 upon 1 plus e raised to minus x, because डिवाइड में स्क्वायर था, like न्यूमरेटर में सिंगल टर्म था, so that will be cancel out. टर्म with the single power था. Okay, and what about this one? That will be remain same. So 1 upon 1 plus e raised to minus x whole square. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है then you can ask. Okay, यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. Now what about this 1 upon 1 plus e raised to minus x? That is actually hj. Okay, मैंने उसको hj बोला था. So now let me just write down here that is hj. That is actually hj minus this is nothing but an I can say that oh this is the square of the whole term. Okay, मैं यहाँ ना लिखूँ तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. Okay, so इस पूरे को मैं इसका पूरे का स्क्वायर बोल सकता हूँ. So that is okay, no, that's all good.
Okay, so I can just write down that is nothing but an hj square. Now let me take a common. मैं यहाँ पे hj को common ले लेता हूँ. Then final answer is actually 1 minus hj into hj. What is that hj? We will discuss that later on. But I hope that is clear. मैंने उस जो मेरे पास जो फॉर्मूला था उसको मैंने पहले से hj डिक्लेयर कर दिया. यहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम गाइस? विजय सर, पृथ्वीश तुझे तो प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, मुझे जब तक पता है. मौलिक सर, जस्ट रिकॉल करना हम लोग को लाइक अपने 11th 12th. नो सर. फाइन. सो मैं स्क्रीन को ओपन रख रहा हूँ. वी विल जस्ट गो विद दिस वन. ओके, इसको थोड़ी देर के बाद यूज करना. सो नाउ व्हाट इज बैक प्रोपगेशन? माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट, व्हाट इज बैक प्रोपगेशन? द थिंग इज हम लोग ओके नाउ लेट आई जस्ट क्रिएट वन मोर डायग्राम. सो देयर इज अभी हम लोग अगर इनपुट लेयर वगैरह का डिस्कशन करें तो अब तक हम लोग हिडन लेयर की बात करें या ऐसा कुछ भी डिस्कस करें, देन these two are the actually input layer. Now consider मेरे पास दो hidden layer थे. First hidden layer having 3 inputs, second hidden layer having actually 3 inputs in the sense first hidden layer having 3 neurons, second hidden layer having 2 neurons, and this is the output layer. Now how the actually edges will be there? So first input से तीनों के पास कोई ना कोई edge जाने वाला है. So here I have edge from first input to all these neurons. I have an edge from actually I have an edge from second input to all these neurons. Now whatever the outcome is there, यहाँ से जो भी output आने वाला है उस output को हम लोग second hidden layer में as input pass करने वाले. Okay, that's that. So it will be something like this. और इसका जो output है वो यहाँ पे pass होगा. So ऐसा कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरली. Now consider मुझे कुछ weights की जरूरत थी. So let I just say this is a weight 1. Okay, यहाँ पे weight 1 था. Let's change the color. So this is weight 1. यहाँ से हमने weight 1 लिया. Here there is a weight 2. Okay, ये third वाला जो भाई साहब था that is actually weight 3. Because weight in the sense what I mean to say, weight in the sense जब आप data pass करोगे at that time हम लोग जो भी मेरा input है, let I say input is nothing but an xi. Okay, so first वाला input में से मैं कुछ data pass कर रहा हूँ, so that is actually x1. Otherwise 3 features are there. तो मुझे उसको weight के साथ otherwise right now we have 2 features. उसको weight के साथ multiply करके हर एक न्यूरॉन को पास करना. So formula was actually wixi. अगर हम लोग formula की बात करें, so that's actually wixi, that is integration function. So I have to just go with w1, w2, w3. But obviously मैंने अभी bias को consider नहीं किया, but you can consider first layer के लिए bias की value b1 है, second layer के लिए bias की value b2 है, थर्ड लेयर के लिए बायस की वैल्यू b3 है. दैट यू कैन आल्सो कंसीडर, बट राइट नाउ जस्ट इग्नोर दिस. ओके, अभी मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है. तो राइट नाउ मैं नॉर्मली वेट की बात कर रहा हूं. सो हियर आई हैव w1, w2, हियर दैट इज w3 एंड हियर देयर इज अ w4. तो मैंने पहले 4 वेट को कंसीडर किया. w1 इज फॉर दिस गाय, w1 इज दिस, w2 इज दिस, w3 इज दिस. नाउ ओके, w4 यहां नहीं आने वाला. फाइन, 1 मिनट. You can just write down w4. That one also आप उसको किसी को भी w4 लिख सकते हो, it doesn't matter. Okay, so w4 is here, w5 is here, w6 is here. तो मैंने पहले सबके weight consider. Now I just got first hidden layer, so you can just say that oh that's a hidden layer 1. That's the hidden layer 2. Hidden layer is 1. Hidden layer मेरा 1 है, but उस न्यूरॉन के मैं नाम दे रहा हूँ. उस न्यूरॉन के मैंने नाम दिया h1, h2, h3. Okay, hidden layer, there is a single hidden layer. Otherwise, you can just say that oh, that is h11, that is h11, okay, that is h12. What is h12? That is hidden layer 1. But neuron is second neuron is there from the first hidden layer. That is h13. Okay, h13. Now, उसमें भी कुछ output निकल रहा है, so that is also considered as a weight. तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो weight देना पड़ेगा. Then and then you can just train, otherwise pass the data to the next neuron. So now here let I just say weight 7. This is weight 8. This is weight 9 from actually h12, that is actually weight 9. This is weight 10. Here I have a weight 11. And this is the final weight, that is actually 12. Okay, now how like after that I have next hidden layer, that is 2, 1, and here there is a 2. Now वहां से जो weight output में निकल रहा है, that is actually known as weight 13, and here I have weight 14.
जब बायस को हम कॉमन रखें तो भी चलेगा, बाकी बायस हर एक के लिए अलग अलग भी लगेंगे। तो कितने बायस वैल्यू की जरूरत है? I need 6 bias values. So total 14 weights and 6 bias value I require. So total 20 weights I have to consider. जब मैं फर्स्ट टाइम वर्क करूंगा at that time मुझे 20 weights पास करने। After that this guy will just say, oh, this is the output, and that output is considered, that is actually yi. Just consider output is actually yi. What is I? I is actually for the ith instance. Consider you have 10 records. I have 10 records and I'm just working with the first record. उसमें से मैंने first feature fetch किया. What I'm just saying, मैं ऐसा कुछ बोलने की try कर रहा हूँ कि guys, this is my x1, this is my x2. So consider we have actually 10 records. So guys, we have actually 1 minute. Let I just draw this firstly. So this is the first feature, that is x1, that's my first input. This is my second input, that is x2, and this is ti. In short, t in this is already actual output, you can say that is actually actual output. So now I have 10 records. So 10 records in the sense you can consider the value of x1 is 1, value of x2 is 1, output is 1. Value of x2 is 0, x1 is 0, x2 is 0, output is 0. You can just consider. So in this way I have 10 records. Okay, in this way I have 10 records actually. Okay, so now उसमें मैं first record पे काम कर रहा हूँ, that means it's my ith record. First record, that means ith record, because I have 10 records actually. Okay, जो कोई भी एक मैं input करूँ, like मैंने पहला record का feature value यहाँ से input किया तो मुझे first outcome मिलेगा. So in the sense, what do you mean by I? It just represent a record. It just represent an ith record. Okay, तो मैंने कोई भी feature value वहाँ से input की, तो according to that feature value मुझे कुछ predicted output मिलेगा, and that predicted output is nothing but a yi. That is my predicted output. But what is the actual output? Actual output is actually ti. Actual output is ti. So what about my error? Error, you can just use an error loss function, or you can use actually absolute error. So let us say ti minus yi, that's your error. What is the ti? And here I have to just go with square also. Agar मैं square loss function use कर, ti minus yi whole square. So that's my error. So what is ti? Ti in the sense actual output. Ti in the sense that is my actual output, and yi means what? That is actually predicted output. So that's actually predicted output, and that's a square of this one. Okay, so yeah, 1 minute. So that's that. That is actually error. Ti minus yi whole square. That means actual output minus predicted output whole square. So now consider my error. We will just take an example after backpropagation theory part. So now consider my error is actually 0.28 or 0.50, otherwise 0.40. You just say, oh, error is actually 0.40. Then your model is not a good model, guys. So why I get this error? Because my I assume actually 20 weights, or in this example I assume actually W1 to W14. Okay, W1 to W14 I just consider random values, I just consider to train my model. मैं repeat कर रहा हूँ. Generally perceptron के लिए perceptron algorithm में क्या था? We just consider, oh, W, you have to just assume the value. Vector of W we have to assume, right? Randomly you can choose either of the thing. So let I say I just choose W1 to W14, that is 1 to 14. मैं 1 to 14 select कर रहा हूँ. Maulik sir just assume 14 to 1. Prithvi just say, oh, 1.1, 1.2 to 1.14. And Vijay sir just take 2, 4, 6 in short even values. So 2 to 28. So with the gap of 2. So guys, हम लोगों ने सबने अलग-अलग weight use किए, but data set is common. सबके पास same data set था. Okay, सबके पास same data set था, and we all guys are using the same number of hidden layers, same number of neurons in hidden layers, and we just try to train our model with the given data set. मैं repeat कर रहा हूँ, सबके पास W vector, in short weight vector different था. सब लोग same hidden layer use कर रहे हैं. सब लोग same hidden layer use कर रहे हैं. So हो सकता है because of this assumption, okay, because of this assumption W1 to W4,
maybe you get error. Because of that, your error rate will be actually considered. That's 45. That means 45% error is there because of this W. Then we have to just update this. First stage पे आप कुछ भी assume करो, that's fine. But afterwards, you have to just update these W's. अगर W update नहीं किया, guys, then you will not get actually an accurate model. आप अपने model को अच्छे से train नहीं कर पाओगे. So now how to change this W? So but obviously it depends on actually error rate. But error कहाँ मिल रही है? Sir, error I will get on this position. Error I can just get on this output layer. मुझे यहीं पे error मिलेगा. So as per that, I can just change the W. So W13 and W14 I can just update. W13 and W14 I can just update. इन दोनों को update करने के बाद इसके पास जो input आ रहा था, ये जो final output layer था, उसके पास जो input आ रहा था, वो input कहाँ से आ रहा था? That comes from actually like this H21 and H22. Okay, and what is the integration function? That actually WIXI. तो इस भाई साहब के लिए जो integration function होगा वो क्या होगा? इस भाई साहब के लिए output layer के लिए जो integration function होगा वो क्या होगा? That is actually W13 into H21. मतलब H21 मतलब hidden layer 2 1 का output. Okay, and W14 into actually H22. Okay, that's the thing. So सिर्फ W change किया मैंने, W मैंने change किया, so output में फर्क तो पड़ेगा, but not like that. इतना ज़्यादा impact generate नहीं होगा. Error rate में इतना ज़्यादा impact generate नहीं होगा. मुझे इनको भी change करना पड़ेगा because these are the input. जो मेरा output आ रहा है, one minute, जो मेरा यहाँ पे output आ रहा है, that's actually my integration function, and according to the integration function, step function, otherwise activation function में आप step function भी use कर सकते हो. In activation function, you can just use sigmoid, you can just use actually ReLU and etc. So what's my activation function? Activation function is like activation function. Let I just say S, that is sigmoid. So that is 1 upon क्या था अपना activation functions? 1 plus e raised to minus क्या था? That is f. What is that f? What is that f? That's my actually activation function. That's my actually integration function. तो ये पूरी की पूरी चीज guys यहाँ पे ऊपर जाने वाली है. Okay, ये पूरी की पूरी चीज यहाँ पे as a power consider होगा. Okay, I can just use 1 upon plus e raised to minus f, and अगर ये पूरा function में वहाँ पे consider करूँ, actually that was actually WIXI in the sense that is f. Okay, so ये पूरा function में यहाँ use करूँ. So sigmoid was actually depend on this function, and sigmoid just consider that's my predicted value. Sigmoid मुझे predicted value देगा. Sigmoid मुझे output value देने वाला था. So output in the sense yi depends on the sigmoid depends on this actually w and h. W I can just change, but मुझे ये h भी change करना है because hidden layer के पास जो output आ रहा है, मान लो वही predicted wrong हुआ तो मैंने यहाँ से input दिया, but ये भाई साहब ये layer next level पे wrong information pass कर रहा है. यहाँ पे wrong information pass हुई है. Now this guy also passed the wrong information to the output layer. So last में W13 W14 में कितना ही changes कर लो, it doesn't matter. W13 W14 में कितना भी changes कर लो, इतना ज़्यादा changes आने वाला नहीं है. So in short आपको accuracy नहीं मिलेगी. So what I have to do? Finally मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे सिर्फ W13 W14 नहीं, मुझे actually हर एक W's को change करने पड़ेंगे. But now the problem is, sir, how to calculate W? W को कैसे calculate करते हैं? मतलब W को change कैसे करते हो? How to change the W? So for that we have a formula, and in that formula, guys, if I just consider perceptron algorithm, then Wn plus 1 is equals to Wn in the sense previous weight plus, and here I just use my loss function. What is my loss function? That is actually Ti minus yi whole square. Whatever the loss function, guys, you are using, Ti minus yi whole square into x. What is that x? That is the feature value. So I have a feature value for the last guy. What is the feature value? Does anyone? What is the feature value for the last layer? Output layer के लिए feature value क्या होगी? Yes, anyone? I just want to use the perceptron algorithm. So what is the feature value for the last guy? So जो भी उसकी input है, that's the feature value. So input कौन है यहाँ पे? H21 and H22.
तो H21 H22 का जो भी आउटपुट आएगा दैट्स नथिंग बट इन फीचर वैल्यू फॉर दिस एक्चुअली लास्ट आउटपुट लेयर. What about this H21? H21 की फीचर वैल्यू क्या होगी? That is actually output of H11, H12 and H13. Okay. What about this H22? इसके लिए फीचर वैल्यू क्या होगा? H22 के लिए फीचर वैल्यू क्या होगा? So that's actually nothing but an output of H11, H12 and H13. What about the feature value for H11? That is actually X1 and X2. X1 and X2 का जो भी आउटपुट आएगा. H12 के लिए फीचर वैल्यू क्या होगा? That is actually X1, X2. What about H13? That is also an H1 and H2. In short, previous layer का जो आउटपुट है, previous layer का जो आउटपुट है, that's the feature value for the next layer. So now that's the thing. So now Ti minus Yi. So first thing, अगर मैं W को अपडेट करना चाहता हूँ, then I need the previous W. Okay, मुझे previous W मतलब previous weight vector, previous weight चाहिए. So I have a weight for all these guys. मेरे पास हर एक बंदे के लिए H11, H12, H13, H21, H22 and this is the output layer. This is the output layer. सबके लिए मेरे पास weight available है. तो previous weight is available. I want to find out the next weight. For that I need an X actually because मेरा formula ऐसा बोल रहा है अगर perceptron की बात करें. W1 is available. I need actually X. मुझे X की भी जरूरत है. X in the sense feature value. So for all these neurons, I have a feature value that is also available. जैसे कि H21 के लिए feature value क्या है? That is H11, H12 and H13. So I have a feature value. Do not worry about it. But what about this Ti minus Yi? So that is not available. That is available for the last guy only. That is available for the last guy. उसके लिए prediction available था. That is actually T. उसके लिए actual output available था. Prediction हमने दिया. Actual output available था. Prediction हमने खुद ने पास किया. That is the thing. But what about this guy? इसका आउटपुट लेयर आउटपुट वैल्यू मुझे मिल जाएगा. H21 का आउटपुट मुझे मिल जाएगा. But what is the actual output? ऐसा कौन बोलेगा? यहाँ पे ये वैल्यू होनी चाहिए. यहाँ पे ये वैल्यू होनी चाहिए. कौन बोलेगा? So I have not an actual value. मुझे उसके पास मेरे पास एक्चुअली H21 H22 के लिए एक्चुअल वैल्यू नहीं थी. H11 H12 H13 के लिए भी मेरे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं था. ओके, वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था. सो व्हाट टू डू गाइस? उसके लिए क्या करें? मेरे पास वो वैल्यू नहीं थी तो देन व्हाट टू डू? सो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला. So what finally the solution, guys? So guys, for that backpropagation algorithm we have to use. So what is the backpropagation algorithm? Just say, oh, आपके पास error rate का मिलेगा, final output layer का error rate मुझे मिल सकता है. Now what is the error rate of this output layer? So that backpropagation actually just says error इसका calculate करे, इसका error compute करे और वो जो error था वो इस बंदे को पास करे. Because यहाँ जो error आया that is because of these two guys. That is because of H21 and H22. So वो back में pass करे. Now यहाँ जो H21 में error आया that is because of these three guys. Okay, ये तीन बंदों की वजह से वहाँ पे error आया. तो यहाँ जो H21 में error आया just pass करे उसको back end. अब इस बंदे के पास जो H11 में जो error आया that is because of this X and H2. So इन दोनों को update करें. You cannot change X1 and X2 but you can just change the weight. So वहाँ पे weight change करोगे तो H11 के अंदर आंसर चेंज होगा, H12 में आंसर चेंज होगा, H13 में आंसर चेंज होगा. उन तीनों में चेंजेस आया तो H21 में H22 में चेंजेस आएगा, उसमें चेंजेस आएगा तो फाइनल मॉडल में चेंजेस आएगा. So that is the backpropagation. But what we have to do in backpropagation, firstly you have to just go forward direction. Just you have to move in the forward direction. Okay, forward direction में move होने के बाद finally you have to just consider, you have to calculate the error. पहले आपको error calculate करनी है. Final error you have to compute. And वो जो error आया that is because of output layer. हो सकता है यहाँ पे 0.45 आए, 0.70 आए. You will get any error because हमने W1 to W14 just assume किया है. Not W1 to W14. Actually यहाँ पे 20 weights we have to consider. 6 bias values are also there. I just ignore that bias value in this example because screen is quite small, so that will be complicated अगर मैं bias value भी consider करूँ. So now the thing is, I hope that's clear. So what is backpropagation? पहले आप forward direction में चले जाइए. Last value compute करें. What is the last value? Last value मतलब output layer तक पहुंचे. Just compute the error. Error compute करने के बाद backward direction में जाइए. जितने भी weights है सबको update करें. Once again final output consider करें. Error rate लीजिए. उस error rate के हिसाब से backpropagation लीजिए. Error rate लीजिए. backpropagation करें. That's it. And finally जब तक आप satisfy नहीं होते हो, that's the outcome. Like मुझे 0.5% error पे काम करना था. Otherwise 95% accurate होना चाहिए मेरा module. So एक threshold तक, एक limit तक नहीं पहुंचते. Just repeat this task. Just repeat this. That is the scenario. So is this clear, guys? I hope समझ में आया है.
But now the problem is I cannot use this perceptron function I cannot use to just because it has an absolute value. यहाँ पे क्या होगा, मुझे यहाँ पे जो changes आया, maybe that is because of this guy and maybe that is because of this guy. So in short, output layer is depends on actually h21 and h22. Output layer is depend on h21 and h22. Okay, so change in output, it depends, it's a summation of change in h21 and h22. But now, like at a time, I cannot compute both this thing. I want to compute h21. h21 में क्या changes आए भाई? So I will just use the partial derivative. मैंने रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा एक फंक्शन दो और फंक्शन के साथ कंबाइंड है. मेरा एक फंक्शन दो और फंक्शन के कॉम्बिनेशन में, अदरवाइज दो और फंक्शन से बना हुआ है. इन शॉर्ट, हियर माय आउटपुट लेयर, लेट आई जस्ट give the label. So that is output layer. So output layer, it depends, it's a combination of h21 and h22. So output layer में जो भी error आया, that is because of the error in h21 and h22. So मुझे output layer को update करना, improve करना, then I have to just improve h21 and h22. I have to improve. So now partially I want to just use, मुझे actually h21 को पहले improve करना है. So I will just get the partial derivative. So partial derivative h21 with respect to output, otherwise output layer with respect to h21. कि अगर h21 में changes करा, then what is the changes in output? Now h21, it depends on h11, h12 and h13. h21, it depends on h11, h12 and h13. So उसमें changes आएगा तो h21 में आएगा. So h21, change in h21 with respect to change in h11, changes in h21 with respect to change in h12. In a similar way, a change in h21 with respect to change in h13. Now h11 depends on actually x1 and x2. h12 depends on actually x1 and x2, and h13 is also depends on x1 and x2. So that's the thing. So यहाँ मैं partial derivative को introduce करने वाला हूँ. So I will not use this formula. Okay, ये वाली चीज मैं use नहीं करने वाला. Directly मैं इस चीज को use नहीं करने वाला. But obvious, I want an actually error rate. मुझे error rate चाहिए, but directly I will not use this. Okay, so I hope that is clear, guys. So we will just use this formula. Okay, change in W, delta, and you can just say that's actually a weight. Okay, change in weight is actually directly proportional to eta. What is eta? That's a constant. Like consider it's a constant. So in error, change in error with respect to change in W. Change in error with respect to W. So that's actually delta W. That's actually a delta W. Now the thing is how to compute this change in error. Error in the sense that is actually a loss function. Okay, error in the sense what that is actually a loss function. As we know, that is actually a loss function. So इसको मैं L लिख देता हूँ, like delta of error, that is actually a delta of L. Delta of L with respect to U. Now consider U is combination of V and U. Okay, U मतलब वो वापस दो चीज का बना हुआ है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं like on the ith position, on the ith instance, sigma of I, that is actually delta of L upon delta of Vi, with delta of Vi with respect to delta of U. So what is that sigma? Why just I write down a sigma? Sigma इसलिए लिखा because अगर मान लो मैं ऐसे बोलूं okay, changes over here, so it's a combination of changes all these guys. It is a summation of changes of all these guys, in सबका summation. अब मैं बोलूं okay, changes in h21, it's a combination of changes, error rate changes in h11, h12 and h13. So that I just use a sigma. Okay, divided by delta, and for the ith record, it's a summation of all these things. Okay, we will discuss all this thing in actually detail, but I hope that is basically clear why I have to introduce the backpropagation rule. मुझे backpropagation or not the rule, backpropagation algorithm मुझे क्यों discuss करना है? Because perceptron is not enough. Okay, मुझे hidden layer में कुछ भी weight में changes करना है, then I cannot use the perceptron. So that actually मैं gradient based learning का use करूँगा. Why gradient based learning? Gradient based learning actually मुझे differentiation के form में actually error rate को change करना सिखा रहा था. So I will just use the same formula. In the sense I will use this type of things. This type of yeah, finally here it is. So this type of thing I will use. Okay, and here there is a partial derivative. So we will discuss this also. But finally, what is backpropagation? I hope that is clear.